Good evening, all of you. Good evening. Question number 2E, next question. Question number 2E, next question. A factoring firm has credit sales of 360 lakhs and its average collection period is 30 days. The financial controller estimates that the bad debts losses are around 2% of the credit sales. The firm spends rupees 1,40,000 annually on debtors administration. This cost comprises of telephonic and fax bill along with the salary of the staff members.
Highlight the portion. These are avoidable costs. A factoring firm has offered to buy the firm's receivable. The factor will charge 1% commission and will pay an advance against the receivable at an interest rate of 15% per annum after withholding 10% as reserve. What should the firm do? Assume 360 days in a year. चलो एवरीबडी प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का. Chalo, let us have understanding that say how to do this answer. I am reading the question again. A factoring firm has credit sales of 360 lakhs. So sales of the company is 360 lakhs and its average collection period is 30 days. The financial controller estimates that the bad debts loss are around 2% of the credit sales. The firm spends annually 1,40,000 on data's administration. So there is a collection cost of 1,40,000. The cost comprises of the telephonic and the fax bill along with the salary of the staff members. These are avoidable costs, means once you appoint the factor, these costs will not be incurred. A factoring firm has offered to buy the firm's receivable. The factor will charge 1% commission and will pay advance against the receivable at an interest rate of 15%. So this is in-house and there is factoring. So percentage of the factoring commission is 1%. Rate of interest for the loan is 15%. And factor reserve is provided as 10%. What should the firm do, assuming that there are 360 days in a year? If 1 year is consisting of 360 days, then what should the company do? That is a question. Let us have understanding of the question. यहाँ पे हमको ये डिसाइड करना है that से कंपनी को क्या करना चाहिए, फैक्टर को अपॉइंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. We understand that so the question is only providing the information of the existing sales. Once you appoint the factor, the sales क्या होगा उसके लिए information नहीं है. So we know that say we make an assumption that it is going to remain same. Revised collection period नहीं है, we assume it to be same. Regarding bad debts, no clarification is given. It is recourse or non-recourse. We assume it to be non-recourse. Collection cost के बारे में तो दे ही रखा है that it is avoidable.
So we are so like that. So these are the basic assumptions that say we make. Okay. Now वापस हमको यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, टोटल कॉस्ट का भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है. So we cannot adopt the total profit or loss approach because variable cost is also not given and the total cost is also not given. So the total profit or loss approach नहीं हो सकता है. Further we understand that say हमको यहाँ पे carrying cost sales value पे निकालना पड़ेगा. Why? Because we have not been given the cost information. Next, we understand that say यहाँ पे क्वेश्चन में हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है regarding the sales जो सेम रहता है. So we understand that say we are required to adopt the total relevant cost approach for decision making. हम लोग इंक्रीमेंटल अप्रोच भी कर सकते हैं. However, going with the total relevant cost approach थोड़ा सा सिंपल रहता है. So that is what I suggest to students to do relevant cost approach. So let us answer the question. Heading right down. Decision making about appointment of factor. उसमें लिखो स्टेप नंबर 1 debtors after appointment of factor. कैसे किया जाएगा? Annual credit sales divided by 360 into average collection period. पूरे साल का क्रेडिट सेल्स है 360 lakhs. Divided by 360 days into average collection period. ₹1,00,000 into 30 days यानी 30 लाख. चलो यहां तक आंसर आप लिखो और स्टेप नंबर 2 अपने आप कैलकुलेट करो. स्टेप नंबर 2 क्या होगा? लोन अमाउंट. चलो स्टेप नंबर 2 अगर किसी का आ गया मेरे को आंसर बताइएगा.
ओके, लेट अस सी कैसे किया जाएगा. Please write down answer. Step number 2 is loan amount. लोन अमाउंट का जो कैलकुलेशन है वो डेटा से शुरू होगा. डेटर्स का अमाउंट है 30 lakhs. हमको फैक्टर रिजर्व दे रखा 10%. यानी ये 3 लाख रुपए का रिजर्व रखा है. फ्यूचर में क्या होगा कि अगर उनका पूरा का पूरा कलेक्शन आ जाएगा ना तो पैसा ये लोग उनको दे देंगे. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. ये फैक्टर रिजर्व का मतलब ये है दैट से इतना अमाउंट उन्होंने अपने पास रखा हुआ है दैट दे विल रिटर्न अस वंस दे विल डू द एंटायर कलेक्शन. less factoring commission. $30 lakhs का 1%. 30,000 रुपए. वी अंडरस्टैंड दैट से जितना वो अपने को एडवांस देगा ना उसका 1% वो काट के पैसा अपने को देगा. So this is the amount on which interest is calculated. So 30 lakhs minus 3 lakhs minus 30,000. So 26 lakh 70,000. फिर क्या होगा? फैक्टर पहले 30 डेज का इंटरेस्ट काट के पैसा देगा. So less interest collected in advance. वो कैसे आएगा? $26,70,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% और टाइम पीरियड कितना 30 डेज. So 33,375. तो बाकी का क्या हो जाएगा लोन अमाउंट. $26,36,620. चलो राइट डाउन आंसर. कोई क्वेरी या डाउट हो तो मेरे को पूछो, अदरवाइज गिव अ थंब टू मी.
Okay, thank you very much. चलो, स्टेप नंबर 3, write an answer along with me. Calculation of total cost. उसमें दो ऑप्शन है, इन हाउस एंड फैक्टरिंग। ये दोनों ऑप्शंस है हमारे पास। लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग दैट से यहाँ पे कैसे किया जाएगा। एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन फॉर 2 मिनट्स नाउ। इन हाउस में क्या आएगा, बेंडेट्स आएगा। कितना आएगा, 360 lakhs का 2%। बेंडेट्स इज 2%, that comes to 7,20,000। बाद में बेंडेट्स का खर्चा नहीं आएगा बिकॉज वी अस्यूम दैट इट इज नॉन रिकोर्स। फिर दूसरा आएगा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग कलेक्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं। 1,40,000 और बाद में 0, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है इट इज अवॉइडेबल। नेक्स्ट आएगा फैक्टरिंग कमीशन, which is required to be paid at the rate of 1%. तो 360 लाख का 1%, 3,60,000। फिर इंटरेस्ट पेमेंट टू फैक्टर आएगा। देखो, अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इज 26,70,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। तो ये पूरे साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 4,05,000। फ्रेंड्स, यू कैन सी दैट इस क्वेश्चन में अपने को एक इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है। क्या, कंपनी का खुद का कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है जिसपे इंस्टीट्यूट ने सजेशन आंसर ऐसा दिया है दैट यू जस्ट इग्नोर इट। अगर अपने पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी का इंफॉर्मेशन नहीं है, देन इन दैट केस हम लोग कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन भी इग्नोर करेंगे एंड विल मेक द कंपैरिजन ऑफ द टोटल कॉस्ट। नहीं तो अगर अपने पास कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता तो एग्जिस्टिंग कैरिंग कॉस्ट और नया कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि क्या होगा, पूरे डेटर्स में से इतना ही लोन मिल रहा है, बाकी का फंडिंग का भी हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते, पर इंफॉर्मेशन नहीं है तो जाने दो। रटन आंसर 720 plus 140, 860. 360 plus 4,05,000, 760,500. So we should appoint factor. चलो, किसी को डाउट या क्वेरी हो तो मेरे को बताइए।
मोइन वाला का क्वेश्चन है कैन वी अज्यूम 15%? बिल्कुल नहीं बेटा, फिर स्टूडेंट्स अलग अलग अजम्पशन करेंगे तो फिर आंसर अलग अलग हो जाएगा। और हमारे पास इंस्टीट्यूट का सजेशन आंसर है ही, दैट्स आपको कुछ अजम्पशन नहीं करना है एंड यू हैव टू कंसीडर द आंसर लाइक दिस। ठीक है, मोइन इज दैट क्लियर? मोइन Moin, is that clear? Okay, thank you. Let an answer. The company is advised to appoint factor. उसे में लिखो as per ICAI suggested answer, we are ignoring carrying cost of own funds, and carrying cost of own funds in both the options. Full stop. So let an answer. Question number 2F. Question number 2F. Let us see. A firm has total sales of 200 lakhs, of which 80% is on credit, means 20% is cash sales. It is offering the credit terms of 2/40 net 120. यानी क्या हुआ कि credit period is 120 days and if the customer is making payment in 40 days तो 2% का cash discount. Of the total, 50% of the customers avail discount and the balance pay in 120 days. Past experience indicates that bad debts losses are around 1% of the credit sales. The firm spends about 2,40,000 per annum to administer its credit sales. Highlight the portion, these are avoidable as the factor is prepared to buy the firm's receivable. He will charge 2% commission.
he will pay advance against the receivable to the firm at an interest rate of 18% after withholding 10% as a reserve. What is effective cost of factoring? Consider 360 days in a year. चलो सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को गो थ्रू करो. Everybody please go through the question. चलो मोइन का क्वेश्चन है, सर बिकॉज ऑफ द absence of information of the cost of capital, here is a possibility of the wrong decision. मोइन अभी क्या है, हमने पूरा का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है, तो अभी हम लोग ऐसा समझते हैं कि प्रैक्टिकली हमारे पास सब इंफॉर्मेशन होगा ही, सो तभी हम लोग करेक्ट डिसीजन ले लेंगे. ठीक है. चलो let us see answer of this question. A firm has total sales of 200 lakhs. Total sales is 200 lakhs, of which 80% is credit sales. Credit sales is 80%. It is offering the credit terms of 2/40 net 120. Of the total, 50% of the customers avail discount. Percentage of the customers availing discount is 50%. And the balance pay in 120 days. Past experience indicates that the bad debts losses are around 1% of the credit sales. So percentage of the bad debts, it is provided as 1%. The firm spends 2,40,000 per annum to administer its credit sales. So collection cost, it is provided as 2,40,000. These are avoidable as the factor is prepared to buy the firm's receivable. ये इन हाउस है, फैक्टर को अपॉइंट करेंगे तो ये खर्चा नहीं होगा. ठीक है. He will charge 2% commission. Factoring commission is 2%. He will pay advance against the receivable to the firm at an interest rate of 18%. Rate of interest 18% after withholding 10% as a reserve. What is effective cost of the factoring? That is a question. Consider 360 days in a year.
1 year is equal to 360 days और क्वेश्चन में ये पूछा है कि what is the effective cost of the factoring? Okay, so let us see that say how to make the calculation of answer. So, students are requested to pay attention. इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ द फैक्टरिंग का मतलब जैसे हमने समझा हुआ है, इट इज इंडिकेटिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी एट विच बोथ द ऑप्शंस विल हैव सेम कॉस्ट. तो हमको यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है कि कंपनी का कौन सा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा जब दोनों ऑप्शंस का खर्चा सेम होगा, और वो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है. चलो लेट अस आंसर द क्वेश्चन. अज्यूमिंग दैट cost of capital of the company is X. At which both options will have same cost comma value of X is calculated as under. So let us understand how to make the calculation of answer. Everybody is requested to pay attention for 2 minutes. देखो वापस नया सेल्स क्या होगा उसके लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे सेम होगा. क्रेडिट सेल्स क्या होगा, सेम ही होगा. अगर इंफॉर्मेशन दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर अपने को क्या करने का है, वी हैव टू अज्यूम इट इज टू बी सेम. क्रेडिट टर्म क्या होगा, सेम होगा. 2/40 नेट 120. परसेंटेज ऑफ द कस्टमर्स अवेलिंग डिस्काउंट क्या होगा, सेम 50%, बिकॉज नो रिवाइज इंफॉर्मेशन इज गिवन. बेड डेट्स के लिए अज्यूम करेंगे 0 इन अ वे दैट से इट इज अज्यूम्ड टू बी नॉन रिकोर्स, इसलिए 0 लेंगे. चलो राइट आंसर. Step number 1, calculation of debtors, comma after appointment of factor. देखो डेटर्स कैलकुलेट करने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो क्रेडिट सेल्स चाहिए और दूसरा कलेक्शन पीरियड चाहिए. तो देखो टोटल सेल्स है 200 लाख, 80% इज क्रेडिट सेल्स, तो सबसे पहले क्रेडिट सेल्स का कैलकुलेशन. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल्स. Total sales into 80%. $200 lakhs into 80%. So it is 160 lakhs. फ्रेंड्स अगेन हमको क्वेश्चन में ना कलेक्शन पीरियड नहीं दे रखा है, हमको सिर्फ क्रेडिट टर्म्स दे रखा है. सो हमको क्या करना पड़ेगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड फाइंड करना पड़ेगा.
Working note number 2. Calculation of average collection period in terms of days. Customers are divided into two parts. Customers who avail cash discount and customers who do not avail cash discount. Percentage. There are 50% customers falling in the first bracket. And of course, they have to make payment in 40 days. So percentage into days. 20. Customers who do not avail cash discount, उस पर कितने होंगे? 50%. बाकी के उनके लिए क्रेडिट पीरियड क्या है? 120 डेज. और क्वेश्चन में दे भी रखा है दैट से दे आर मेकिंग पेमेंट इन 120 डेज. So 0.5 into 120, that is the way it comes to 60 days. 20 plus 60 क्या होगा? 80 days. तो 80 days का क्या हो गया? एवरेज कलेक्शन पीरियड. After this, we'll make the computation of the debtors. जो हमारा स्टेप नंबर 1 है. Annual credit sales upon 360 days. Into collection period. $160 lakhs credit sales है, divided by 360 into 80 days. So it is 35,55,556. चलो स्टेप नंबर 2 में लोन अमाउंट अपने आप करो.
मोइन का क्वेरी है कि सर वो जो बेड डेट से 1% वो एवरेज कलेक्शन पीरियड में नहीं आएगा, नहीं आएगा. That we will not consider in the bed debts calculation. Step number 2, loan amount. Let us see that's the loan amount ka calculation. Okay, I have got answers. Very good answer. We start with the debtors. $35,55,556. लेस फैक्टर रिजर्व कितना दे रखा है 10%. 3,55,556. That is 35,55,556 उसका 10%. Again we will make an assumption that the factoring commission is collected in advance. Less factoring commission 35,55,556. उसका क्या दे रखा है आपने को फैक्टरिंग कमीशन का परसेंटेज 2%. So 35,55,556 into 2%. 71,111. This is the amount on which interest is calculated. 35,55,556 minus factor reserve minus 71,111. So 31,28,889 less interest collected in advance. Again we make an assumption that the interest is collected in advance.
3128,889. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा है अपने को 18% into 80 divided by 360. So it is 125, 156. और बाकी का क्या हो जाएगा लोन अमाउंट? चलो रेड आंसर. So loan amount is 30,03,734. So write an answer. Just give a thumb to me once you complete writing the answer. किसी को डाउट या क्वेरी हो तो भी पूछ लेना फ्रेंड्स. Today 6:30 to 8, Joki sir is also going to take a lecture, costing. Okay, chalo, thank you. Step number 3, calculation of value of x. There are two options that we have. One is in-house management of the receivable, and another is factoring services. Everybody please pay attention for 2 minutes. सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? कैश डिस्काउंट 160 lakhs का जो क्रेडिट सेल्स है उसमें से आधे कस्टमर्स डिस्काउंट का फायदा ले रहे हैं और डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है? 2% है. तो 80 lakhs का 2% कितना होगा? 1,60,000.
बेड डेट्स कितना है? 1% है। So 1% of 160 lakhs is 1,60,000. फिर क्या होगा? कलेक्शन कॉस्ट कितना है? 2,40,000। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट ऑफ ओन फंड्स, उसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स? वी अंडरस्टैंड दैट सेम 160 lakhs divided by 360 into 80 into x. 35,55,000 556 into x. मेरे ख्याल से एग्जिस्टिंग में सिर्फ इतना ही आएगा। फैक्टरिंग में कैश डिस्काउंट सेम आएगा 1,60,000, क्योंकि हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा क्रेडिट टर्म सेम रहेगा। मेंटेनेंस नहीं आएगा बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज नॉन रिकोर्स। कलेक्शन कॉस्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन में दे रखा है कि नहीं आएगा। कैरिंग कॉस्ट ऑफ ओन फंड्स में क्या होगा? 35,55,556 इतने वैल्यू ऑफ द डेटा से माइनस 30,03,734। यानी हमको खुद को कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 551,822, जिसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा? x। फिर क्या आएगा? इंटरेस्ट पेमेंट टू फैक्टर, $31,28,889 into 18%. That comes to 5,63,200. फिर क्या आएगा? फैक्टरिंग कमीशन, और इन हाउस में नहीं आएगा, सिर्फ फैक्टरिंग में आएगा। 160 lakhs into 2%, ताकि सिर्फ क्रेडिट सेल्स के कलेक्शन के लिए अपने को फैक्टर का जरूरत है। यानी क्या होगा? 3,20,000। तो ये क्या हो गया? टोटल कॉस्ट। बस खत्म हो गया। 160 plus 160 plus 240, so 516. Plus 35 lakh 55,556 into x। ठीक है ना? ये कैरी कॉस्ट हो गया, बाकी सब खर्चा आउट ऑफ पॉकेट। ये 1,60,000 इंपॉर्टेंट है because we assume that the credit term is going to remain same. So 1043,200
plus 551822 into x, दोनों का टोटल कॉस्ट सेम हो जाए उस हिसाब से अपने को x का वैल्यू फाइंड करना है। चलो किसी को डाउट या करिए तो बताइए, वेरी सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद लिखेंगे वैल्यू ऑफ x। चलो रिटर्न आंसर, टोटल कॉस्ट फॉर इन हाउस is equal to total cost for factoring. So इन हाउस का खर्चा इतना है, $35,55,556 minus 551,823 in 30,03,733। हमेशा ये स्टेप नंबर 2 लोन अमाउंट ही आ जाएगा। It is 483,200। So x will be found as balancing figure. (16.09%). Just give a thumb to me once you complete writing the answer. Okay. Thank you. Second part of the question.
सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये पूछा है, इफ द बैंक फाइनेंस फॉर द वर्किंग कैपिटल इज अवेलेबल एट द रेट ऑफ 14% इंटरेस्ट रेट, तो दे रखा है दैट्स द बैंक फाइनेंस इज अवेलेबल फॉर वर्किंग कैपिटल एट द रेट ऑफ 14%. Should the firm avail the factoring services? That is a question. यानी हमको ये डिसाइड करना है कि वेदर टू अपॉइंट द फैक्टर और नॉट अगर कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 14%. चलो राइट आंसर. सेकंड क्वेश्चन में डिसीजन मेकिंग अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ फैक्टर. उसमें बेसिकली दो ऑप्शंस हैं. द फर्स्ट वन इज इन हाउस. इन हाउस का खर्चा कितना है? 5,60,000 प्लस 35 लाख 55,556 इंटू क्या करेंगे फ्रेंड्स? इंटू करेंगे 14%, जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है. सो 35,55,556 इंटू 14% कितना आता है? 4,97,778. So 1057 778. उस तरफ क्या होगा? 1043,200 plus this into 14%. So 1043,200 plus 551,823 into 0.14. So 77,255. So 11,20,455. ऐसा करके आप दैट इज कंपैरिजन करो and you select which is having the lower cost. Give a thumb to me once you complete writing this.
चलो, फारूकी ने बिल्कुल सही बताया है. That's why we can give answer of this question by a different method also. ये डिटेल वर्किंग न करते हुए we can write the conclusion like this. That is alternative solution. Alternative solution क्या है? As company's cost of capital is less than effective cost of factoring comma do not appoint factor. ऐसा हम लोग यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं. देखो, कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 14% है. हमारा खुद का कॉस्ट 14 है. फैक्टर को अपॉइंट करने का खर्चा कितना है? आई थिंक 16.09 है. तो फैक्टर को अपॉइंट करने का खर्चा ज्यादा है. देन व्हाई टू अपॉइंट? लेट अस नॉट अपॉइंट. आंसर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं आंसर. मोइन फारूकी, इज दैट क्लियर बेटा आपको? मोइन फारूकी, क्लियर? Just give a thumb to me once you complete writing the answer. Okay, thank you. Okay. चलो, क्वेश्चन नंबर 3. Let us see the next question. Question number 3. In that, the first question is from November 2009, question number 5 triple I. Let us see the next question. So let us see this question. 5 triple I. Differentiate between factoring and bill discounting. That is a question. Let us have a discussion first of all before we read the answer.
फैक्टरिंग, bill discounting. When you appoint a factor, then in that case what happens, I'd say technically you outsource your entire collection department. So this is what say we understand is the like management of receivable. This is what say we understand is the factoring. While bill discounting is only the financing. जिससे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ बिल को सिर्फ डिस्काउंट करवाते हैं. यहाँ पे क्या होता है, डेट से पूरा का पूरा आपका जो कलेक्शन का काम है वो पूरा का पूरा आउटसोर्स किया जाता है. सो यू ऑथोराइज समबडी टू डू द कलेक्शन ऑन योर बिहाफ. वो पूरा का पूरा आपका डेटा का एडमिनिस्ट्रेशन करता है, किससे कितना पैसा लेने का बाकी है, उन सबका हिसाब वही रखता है. सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द आउटसोर्सिंग एंड दिस इज ओनली प्योरली फाइनेंसिंग. ये पहला डिफरेंस है. दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि फैक्टर में एक तो कंपनी होता है जो फैक्टर को अपॉइंट करता है, फैक्टर होता है जो कस्टमर के पास से जाके पैसा लेके आता है, और कंपनी के कस्टमर्स होते हैं. सो देयर आर दीस थ्री पार्टीज दैट वी हैव. बिल डिस्काउंटिंग में क्या होता है, दैट से द कंपनी होता है. We understand that say basically company is a drawer of the bill. दूसरा बैंक होता है, that is considered to be paying. और तीसरा कस्टमर होता है, that is considered to be drawing. So these are the parties to the contract and these are the parties to the contract. तीसरा, factoring is not governed by the Negotiable Instrument Act. Well, bill discount is governed by the Negotiable Instrument Act. ये उसका बड़ा फर्क है. Over here there is no Negotiable Instrument Act. Over here there is Negotiable Instrument Act. यहाँ पे कुछ भी डिस्प्यूट है ना तो वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा. यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट है ना, देन इन दैट केस से हमको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मुताबिक जाना पड़ेगा. फोर्थ, वी अंडरस्टैंड दैट से द फैक्टरी में क्या होता है, रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स ऐसा बाइफर्केशन है. यहाँ पे ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं होता है. यहाँ पे हमेशा रिकोर्स ही होता है. यानी कि अगर कस्टमर ने पैसा नहीं दिया ना तो बैंक कंपनी के पास ही जाएगा, बोलेगा कि आप हमारा पैसा वापस कीजिए. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड मेजर डिफरेंसेस. चलो उनका आंसर रीड कर देते हैं अभी हम लोग. थर्ड क्वेश्चन आंसर. द डिफरेंस बिटवीन फैक्टरिंग एंड बिल डिस्काउंटिंग आर, फैक्टरिंग इज कॉल्ड इनवॉइस फैक्टरिंग, whereas the bill discounting is known as invoice discounting. In factoring, the parties are known as the client, factor and the debtor, whereas in case of bill discounting they are known as drawer, drawee and paying. Factoring is a sort of the management of the book debts, whereas bill discounting is a sort of the borrowing from the commercial bank. For factoring, there is no specific act, whereas in case of bill discounting, Negotiable Instrument Act is applicable. This is what we understand. फिर पूछा है मई 2011 में क्वेश्चन नंबर 1D. So it is May 2011, question number 1D. क्वेश्चन में ये पूछा है
What is factoring? Enumerate the main advantages of the factoring. That is a question. So the question is that what is factoring and what are the main advantages of the factoring? That is a question. So देखो, we understand like this. So we understand like this कि basically factoring is outsourcing of the work. आपका जो कलेक्शन का काम है वो आप आउटसोर्स कर रहे हो, आप किसी को बाहर दे रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, दैट से यू विल बी एबल टू बेटर फोकस ऑन योर मेन बिजनेस. और जब आप अपने मेन बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे तो देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी दैट सेल्स ऑफ द कंपनी विल इंक्रीज. There is a fair possibility that say you will be able to improve quality of the product. Then there are fair chances that say you will be able to give that is more attention to the research. फिर आप अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट री इंजीनियरिंग कर सकते हो, आप अपना प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कम कर सकते हो, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो. Why? Because you'll be more focused on your operation. दूसरा, we understand that say कई बार क्या होता है कि customer does not have an intention to delay the payment. Basically हमारा क्या होता है that say we do not have the like excellent system with which we have to make the follow up of the customer. तो उसकी वजह से ऐसा होता है, listen carefully, उसकी वजह से ऐसा होता है that say we are not able to say get the collection in due time. कस्टमर क्या बोलता है कि मेरे यहाँ से आके चेक लेके जाओ, आई डोंट माइंड, पर हम ही वहां पे नहीं गए क्यों, क्योंकि हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट काम थे. फैक्टर का तो क्या पूरा दिन एक ही काम धंधा है, क्या कलेक्शन करने का. सो द फैक्टर वुड बी एबल टू गेट द कलेक्शन फास्टर, तो उसकी वजह से अपना एवरेज कलेक्शन पीरियड गिर सकता है. अगर नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग सर्विसेज है तो हमारा वेंडर्स एलिमिनेट हो जाएगा. Like that, say we understand that say these are the advantages that we have once you appoint the factor. अच्छा, हमेशा there is always a cost associated with the advantage. तो फैक्टरिंग कमीशन का खर्चा लगता है, इंटरेस्ट का खर्चा लगता है, तो हमको कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस करके फैक्टर को अपॉइंट करना चाहिए. Let us see the answer. Factoring means provision of the specialized services relating to the credit investigation, sales ledger management, purchase and the collection of the debts, credit protection, provision for the finance against the receivable, and risk bearing. In factoring, accounts receivable are generally sold to financial institution, a subsidiary of a commercial bank called factor, who charges commission and bears a credit risk associated with the accounts receivable purchased by it. तो वो नॉन रिकोर्स होगा तो ही वो क्रेडिट रिस्क बेयर करेगा, नहीं तो नहीं. The main advantages: the firm can convert the accounts receivable into cash without bothering about the repayment. ये लोन वापस देने का हमको कोई टेंशन नहीं है. Why? Because जो फैक्टर्स पैसा कलेक्ट करेगा ना हमारे कस्टमर से, उसी से लोन रीपे हो जाएगा. It ensures definite pattern of the cash inflow. Third, continuous factoring virtually eliminates the need for the credit department. Factoring is gaining popularity as a useful source of the finance, short-term funds requirement of the business enterprise because of the inherent advantage of the flexibility it affords to the borrowing firm. The seller firm may continue to finance its receivable on a more or less automatic basis. If the sales expand or the contract, it can vary the financing proportionately. Next, unlike an unsecured loan, compensating balance are not required in this case.
Another advantage that is consists of relieving the borrowing firm of substantially credit and the collection cost and form a considerable part of the cash management. यानी अभी हमको कलेक्शन के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एंड वी हैव दैट एडवांटेज. हम लोग हमारा कलेक्शन कॉस्ट क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं. यहाँ पे एक वर्ड यूज किया उन्होंने कि कंपनसेटिंग बैलेंस नहीं रखना पड़ेगा. उसका मतलब क्या वो मैं आपको समझा देता हूं. बेसिकली क्या होता है कि यू माइट बी अवेयर कि अगर हम लोग बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं ना बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं ना, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है सपोज की 10%, तो इंटरेस्ट आता है 10,000 का. ये 1 लाख के लोन के लिए सपोज कि हमको 20% का बैलेंस वहां पे रखना पड़ेगा. यानी उनका एक रिक्वायरमेंट होता है कि आपको 20,000 का कंपनसेटिंग बैलेंस रखना पड़ेगा. यानी 1 लाख का लोन भले लिया आपने, पर आपको 20,000 का बैलेंस रखना पड़ेगा. यानी इनफैक्ट आप 80,000. तो देखो क्या हुआ, 10,000 का खर्चा 80,000 यूज करने के लिए. 10,000 का खर्चा 80,000 यूज करने के लिए, तो खर्चा कितना हुआ, 12.5%. कैसे, 10,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100. ऐसा करके हम लोग क्या 12.5% का इफेक्टिव खर्चा होगा. तो कंपनसेटिंग बैलेंस जितना ज्यादा होगा उतना हमारा खर्चा ज्यादा हो जाता है. आई होप दैट एवरीबॉडी इज क्लियर. किसी को डाउट या क्वेरी है तो मेरे को बताइएगा. May 2013 उसमें 5D. वापस क्वेश्चन वही है फ्रेंड्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फैक्टरिंग एंड बिल डिस्काउंटिंग. ऑलरेडी ये नवंबर टाइम में कवर हो चुका है, सो इसको जाने देते हैं. फिर May 15 उसमें क्वेश्चन नंबर है 7C. डिफरेंशिएट बिटवीन द फैक्टरिंग एंड बिल डिस्काउंटिंग. अगेन ये कवर हो चुका है. फिर May 17 May 17 में